दोस्तों, मैं हूं इंदौरी और इंदौर फूड रेसिपीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि मैं उपवास की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो उपवास का नाम आते ही साबूदाना याद आता है, पर आज मैं साबूदाने के वड़े या खिचड़ी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ साबूदाने की ही एक इनोवेटिव और एक क्रिएटिव रेसिपी। तो बिना देर करे इसे ट्राई करने चलते हैं। ये है साबूदाने के लड्डू। तो चलिए देखते हैं साबूदाने के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। वाओ, क्या यम्मी साबूदाने के लड्डू बने हैं मस्त से। मैं तो इसे खाने जा रही हूँ, आपका क्या प्लान है? लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं? In the food recipes.